Good morning, ma'am. Good morning, बच्चे. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, children. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, beta. So I think before I begin the class, I request you all to keep your copy, pen, pencil along with you. Good morning, ma'am. Good morning, बच्चे. हम 2 मिनट वेट करेंगे बच्चों के लिए. ओके, we'll wait for 2 minutes. So by that time, all of you be ready Yes, ma'am. for the writing things. Now you have to write the things today. So please be ready with your copy, pen, pencil. So children, I think I will begin the class. Let's see. Only 12 है बच्चे. I think almost only 10-11 बच्चे ज्वाइन किया है. Good morning बच्चे. Good morning. Okay, so we'll start. So good morning, children, to everyone. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, beta. I think, are you tired? Tired हो गए क्या? I think just now you have finished your, I think science class. Yes, no? Yes. Yes, ma'am. Yes. So I think you are tired of listening and listening, na? Isn't it? थक गए हो? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. So what to do? Now we are on. We are also having the class after just finishing one class after the other, ना? एक के बाद एक शुरू हो गया तो क्या करोगे? You have to be, ना? Yes. So children, I think. Yes, Ankita, are you crying? What happened? No, ma'am. Crying, like crying. I could see your tears, like, na? Is it tears or sweat? Ma'am said. Oh. I thought you are crying. Something happened to you. Okay. So I think we had studied yesterday chapter 1 from Honeysuckle book. Do you remember something of that chapter? Yes, ma'am. क्या Yes, ma'am. समझ में आया? क्या क्या याद कर सकते हो? I think you have so many books to study and all, but do you remember in this chapter something
Not everything, but few things you can A remember. boy whose name is Patrick, who did not do his homework, and Yes. his cat was playing a tiniest man, and Patrick, the Patrick grabbed this man, and the man said, "Please don't me To the cat. I wish you, if you." I wish you that whatever you ask me to do, I will do it. Huh? Yes, ma'am. So Patrick, think that I'm so lucky. I'm so lucky to give my homework semester to tiny man. So the tiniest man said, "Don't say." His face was crushed, and he was feeling very angry. So they started doing their homework. Patrick started reading, and the tiniest man was writing. So the tiniest man said that I want more book and more book. I don't mean a word, so I want more book. So the Patrick go to library and bring more book to study. Then after finishing English, then they started math. So the tiniest man don't understand what is subtraction, addition, multiplication, division, and fraction. So the Patrick also helped to write this. They ended their homework and the last day of the semester, and the Patrick go to school, and all the students he do all homework, but he never do homework in class. So Rebecca, mute yourself. what? Rebecca, mute yourself. Yes. So his parents, teachers, and all his friends feel very happy, and he great, and his mom He was appreciated. Yes. So all teachers, they felt very happy about him, na? Yes. Yes, ma'am. Very good. So let's give a hand for Ankita. Okay. Very good. Keep it up. So I think you have explained nicely according to your understanding. Hai na? What you have understood, you have already you have told your friends and classmates, and in fact, I also heard that what we have studied yesterday, you have remembered very well. Not few things. You have summarized the whole the chapter very nicely. Very good, girl. So I think others also may be knowing something, na? So do you want to share, or we'll do the question answer? Would you like to say something, बच्चे? कोई बच्चे chances दे रही हूँ. You take the opportunity. Doesn't matter whether it is a few 5 lines or 2 lines, whatever it may be, but you have understood. Nobody wants to say. Yes, Suhana is not here today. I can't see her here. Let's see. Suhana, what happened? Your book you are not getting today. No problem. It doesn't require any book. It depends on your understanding what you have understood yesterday. You don't need any book.
आपको जो समझ में आया है ना, दैट्स few lines only you can speak up. If not whole the things, whole the chapter, I'm not asking you, Ma'am, but you have boy, understood. You can put on your video, beta, no problem. Yes. Yes, come on. ma'am, a boy, Few lines, few words. ma'am, a boy. His name is Patrick. He was anytime playing and Every time. every time playing. And one day he saw a kitty was uh, uh, Playing with a doll. playing with the doll, and Patrick was saying to take me the doll, और वो उस डॉल को लेना चाहता था, इसलिए फिर वो उसने कैट से उस डॉल को छीन लिया, और फिर उसने अलीव ने कहा कि आप मुझे वो कैट के पास मत लेके जाओ, आप जो काम कहोगे मैं वो काम करूंगा। तो फिर उस पैट्रिक ने कहा कि तुम मेरे सारा स्कूल का काम कर दो, सेमेस्टर 35 डेज का। फिर वो एलिव उसको हमेशा लाइब्रेरी लेके जाता था और उसके सारी बुक्स पढ़वाता था, और उससे धीरे धीरे सारी बुक्स मतलब पढ़ने में अच्छी लगने लगी, तो फिर वो पढ़ाई पे भी ध्यान लगाने लगा और अच्छे से पढ़ने लगा। Yes. Then at the last what happened? At the end? क्या हुआ last में? Yes. मैम रेखा, Last complete it बेटा सुहाना, complete करो। मैम लास्ट में what लास्ट happened to में him? अलीव ने कहा कि पैट्रिक ने कहा कि तुम इस सीक्रेट किसी को मत बताना, ये सीक्रेट हम दोनों के बीच में ही रहेगा। और फिर उनके टीचर्स को भी वो पैट्रिक अच्छा लगने लगा, और उनके पेरेंट्स भी उसको देख के हमेशा खुश रहने लगे। Yes. So वो पैट्रिक at last he became a very good boy, है ना, very obedient, very good boy. He used to clean the room and keep clean everything and a systematic way, है ना? Yes. Yes, Rekha, you wanted to say beta something? I'll give you chance today. yes ma'am. Okay, come on. Ma'am, a boy name is Patrick. Ma'am, he doesn't. You can put on your video, beta. Like homework, ma'am. हाँ, बेटा आपका वीडियो ऑन करो. Just I want to see you also. Face to face we'll speak. Okay. Yes. Yes, yes, sir. You can unmute yourself, beta. Rekha, you can unmute yourself and speak. Ma'am, my name is Patrick. Ma'am, he doesn't like it to homework. To do any homework. One day he say his kitty play with a doll, and he was saying a doll. He is not a doll. He is a Tiny man. Teeny man, and Tiny man. tiny man. He was. मैम उससे एल्फ ने पैट्रिक से कहा मैम कि मुझे बचाओ, मैं इसके बदले आपको कोई विश मांगने विश पूरा करूंगा। तो उसने उसे बचाया। फिर उस बचाया उसने बोला कि मेरा होमवर्क पूरा स्कूल का होमवर्क
आपको 35 डे का करना पड़ेगा। फिर उनके पास कोई चांस नहीं था, तो उन्होंने हाँ बोला। फिर उन्होंने वो एल्फ काम करने लगे। फिर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, ह्यूमन हिस्ट्री क्या होती है। तो उन्होंने वो पैट्रिक से बोलने लगे, मुझे बहुत सारी बुकें चाहिए और आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी उसे लर्न करने में। इसी तरह पैट्रिक डिक्शनरी, बहुत सारी बुक्स लाइब्रेरी से लाता था और मैं पढ़ता था, और इस वजह से वो रात को अच्छे से सो नहीं पाता था और उसे स्कूल ऐसे जाना पड़ता था नींद में। फिर मैम 30 दिन कंप्लीट स्कूल में होमवर्क सबमिशन होने लगा। मैम उसका होमवर्क कंप्लीट था। उनकी मैम सरप्राइज्ड थी कि उसने होमवर्क किया है, और उनकी मैम ने उन्हें शाबाशी दी और उनकी मम्मी पापा को भी अच्छा लगा और वो बदल गए। मैम बस। Good, very good. So I think children, you have learned something good thing, no? क्या moral है? Anyone can say what is the moral here? क्या moral हो सकता है इसमें? Ma'am, we have to do our own homework. Who give us? What is given to you? Okay, this could be. And one more, you can get the moral from this story, that is work hard, don't be lazy till we get success in life. Okay, समझ में आया ना? You have to work hard to get something, to be successful. Yes. तो बच्चे, I think sorry, I did something. बच्चे, I think you have understood this chapter very well. Rest of you, कोई बच्चे किसी को समझ में नहीं आया होगा, please you let me know. Otherwise, I will give you the question answer. Now you have to write it down. I will share it. समझा दो। Yes, करना। मैम आपने तो कल only words भेजे थे, meaning नहीं भेजे। Yes मैम। हाँ, yes, and in that I had written on the top. Now you have to find out. Okay, write the word meaning of the following words. Write the meaning of the following words I had written. Means you have to search and write by yourself. Every day बेटा spoon feeding दूंगी तो आप लोग learn नहीं कर पाओगे। जब अपने खुद कोशिश करोगे, sometimes I will give you like that, so that you will be able to learn how to search. डिक्शनरी में खोजोगे, कैसे उसका मीनिंग याद रखोगे, है ना? समझ में आया? That's why I gave you like that. Otherwise मैं आप लोग को everyday spoon feeding दे रही, question answer everything I am giving you, word meaning and all that I am giving you. For sometimes you have to do by yourself, है ना? Yes, do you agree with me? कर सकते हो ना बच्चे? 10 words का मीनिंग तो ढूंढ ही। Yes ma'am. Yes ma'am. हाँ। Yes ma'am. I think Parna he wanted more explanation. So Parna beta, are you here? Yes Parna. Yes ma'am. Yes ma'am. हाँ, तो Parna आपको मैं explain करूँगी, but I think all are in the line and all are ready to write the question answer. So I will give you the question answer first. If classes खत्म हो भी जाएगा, then I will call you and I will explain. Parna, ठीक है? Okay ma'am. Okay, और यदि time होगा, then I will just now after finishing the question answer, I'll explain you. ठीक? So now be ready बच्चे. I will give you the question answer of this chapter. So I will share you the screen.
and I will one by one we will discuss and you will write it down. Clear? Okay. Yes, ma'am. So here is your question answer. Can you see? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, First ma'am. question I am reading. First question I am reading. Just you listen. What did Patrick think his cat was playing with? What was it really? तो इसका मतलब क्या है? You know, what did Patrick think? वो क्या सोच रहा था कि उनका कैट क्या से खेल रहा है? What was it? वो क्या था? So answer is that. Ma'am, doll. हाँ. Ma'am, doll से Patrick ना? thought. So Patrick thought that his cat was playing with a doll, but it was not a doll. In fact, a tiny man. वो डॉल नहीं था, लेकिन एक टाइनी मैन था. मैम लिख Clear? सकते हैं अभी? हाँ, you can write it. मैम सिर्फ only 5 questions हैं. In this only 5 questions, then I will give you some short questions. Okay, like that day I had given you. Yesterday I had given you some questions. No, 5 questions I had given you, short questions, 1 word answer. Yes, Yes. ma'am. Have you Yes, done? That also has to be done in your copy. Okay, so today also I may give you some. So yesterday I gave you 5, today 5. This is your textbook question answer. Okay. And yesterday what I gave that based on the chapter. बीच लाइन का था. हाँ. मैम फर्स्ट क्वेश्चन में व्हाट वाज इट के बाद क्या लिखा है? What was it really? Really spelling REALLY. मैम दोबारा बोल दीजिए. REALLY. हो गया बच्चा? Yes, ma'am. Really. No, ma'am. Question Answer mark. नहीं हुआ. Answer नहीं हुआ. हाँ, रियली के बाद क्वेश्चन मार्क डाल दो. Then answer you write it. रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद लगेगा. बच्चे म्यूट योरसेल्फ एवरीवन. भाई कहीं पे भी लगवा सकते हो, सारे पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद लगेगा. सारे बच्चे म्यूट कर लो और लिखो क्वेश्चन आंसर. सरकारी प्लीज एवरीवन. सारे बच्चे म्यूट करके Yes, लिखोगे. ma'am. Nobody can talk between. हाँ. Yes. मैम हनी सकल की अलग नोटबुक बनानी है. हाँ बच्चे. ओके मैम. मैम बुक का क्या नाम है? हनी सकल. नो मैम, जैसे इंग्लिश होती है, इंग्लिश ग्रामर होती है, वैसी. देखो first 1 and 2 first and second chapter we had studied from other book, that is supplementary. Okay, and this is your honeysuckle book. We have 3 books: supplementary, honeysuckle, then grammar. So this is another book. Clear? First question answer is done. मैम 90 के बाद क्या लिखा है? फर्स्ट क्वेश्चन. मैम. Yes बच्चे, you wanted to say मैम something? लास्ट मैम आंसर नंबर 1 में लास्ट वर्ड क्या लिखा है? मैम हो गया फर्स्ट आंसर नंबर 1. नो मैम. हॉस्पिटल. देखो मैं पढ़ रही हूँ बच्चे, आप लोग म्यूट कर दो. किसी के पापा की आवाज भी आ रही है. Okay, first question का answer I am reading. Listen carefully. Patrick thought that his cat was playing with a doll, but it was
not a doll, in fact a tiny man. Clear? क्लियर है बच्चे? Yes, ma'am. कोई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था? नाउ यू कैन अंडरस्टैंड? यस बच्चे, हो गया? Ma'am, wait for 2 minutes. No, ma'am. ओके. Those who have written the first question answer, you can write it down. Second, मैम हम आगे बढ़ सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन लिख सकते हैं. हाँ 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 लिख सकते हो बच्चे. If it is not visible, you can ask me, huh? First is over ना? सबका फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेकंड? No, ma'am. नो. मैम एक बार आप फोर्थ वाला आंसर बोल सकती हो? फोर्थ? ओके ठीक है. The little man needed Patrick's help in maths, English and history. ओके मैम. मैम फोर्थ वाले आंसर में वो पैट्रिक के बाद हेल्प है. हाँ हेल्प है, HELP. ओके मैम. मैम फोर्थ वाले क्वेश्चन में लिटिल के बाद क्या लिखा है? नहीं इसमें कोई लिटिल मैन, MAN मैन. मैम पहले हम सारे क्वेश्चंस लिख देते, फिर आप सारे क्लियर डाउट्स करवा देना. ठीक है, गुड आइडिया. फिर वन बाय वन विल क्लैरिफाई, है ना? यस मैम. मैम कंप्लीट 3 क्वेश्चंस. Completed. Question 3 completed. Then you do question 4. Question 5. मैम. मैम अभी और भी क्वेश्चंस हैं. Only 5 I will give you today. ओके मैम. मैम कंप्लीट One more. क्वेश्चन One more. One more is there, but that is not required for you. Question 6 also is there, but वो आप लोग के लिए मतलब उतना important नहीं है. That's why I am not giving you. ठीक है? मैम ये वाली बुक मेरी मिल गई. मिल गई.
तो क्वेश्चन 6 ऑल्सो इज देयर, है ना? देखो, जस्ट यू सी। यस मैम, बुक में क्वेश्चन 6 भी है। हाँ 6 है, तो 6 को कट कर दो, दैट इज नॉट रिक्वायर फॉर, जरूरत नहीं है बेटा, उसको कट कर दो। मैम अभी थोड़ा 2 ही क्वेश्चन बचा है, 1 मिनट। मैम मैं साथ के साथ लर्न करती हूँ अब। वेरी गुड। One day I will give you test, okay? Next coming week. Please do learn, okay? मैम ऑल डन। मैम also me. Yes, you have finished till question 5, यस मैम। Yes ma'am. all of you? यस मैम। No ma'am. No ma'am. Okay, hurry up. फिर इसको डिस्कस भी करना है ना बच्चे, और राइटिंग, ओनली राइटिंग इज नॉट इनफ, यू हैव टू अंडरस्टैंड। मैम फिर आपको स्क्रीन पे दिखाना भी है। अभी स्क्रीन पे मैं आपको बैक, I will be back to the camera, then you have to keep your copy in front of you, then I will make you understand face to face. ओके मैम, मैम 1 क्वेश्चन बचा है बस। मैम क्वेश्चन 5 का आंसर दिखा दो। हाँ, इट इज हियर ना, नहीं दिख रहा है, यू कांट सी। नो मैम। बच्चे नहीं दिखाई दे रहा है बेटा आप लोग को? मैम मेरे को दिखाई दे गया। Yes, you can't see? दिखाई दे रहा है बेटा? मैम माय कंप्लीट। यस मैम। मैम माय क्वेश्चन कंप्लीट। Answer is completed. Almost, I think 2 more minutes I will give you, then we will be back to the camera, then I will clarify, I will explain whatever doubt you have to ask me. मैम कंप्लीट। Completed. Shall we be back to the camera बच्चे? यस मैम। All of you have completed ना? Yes, ma'am. तो मैं अभी कैमरा में आ रही हूँ, ओके? Okay. All of you, please keep your copy in front of you. Yes, first one we had already discussed. Now we have finished now first one. So second question. First one is over now. Did you understand first one? Yes. Yes, ma'am. Now second one, you see, why did the little man granted Patrick a wish? वो पैट्रिक को विश क्यों दिया? क्या वादा की थे, है ना? Why did the little man grant Patrick a wish? क्यों? So answer is that Patrick had Patrick had saved the tiny man's life from the cat, so he granted Patrick a wish. है ना? उनको वादा क्यों किया था? क्योंकि वो कैट से उनको बचाया था, है ना? Patrick had saved the life of tiny man from the cat, so he granted him a wish. ठीक है? Clear?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. उनका लाइफ बचाने के लिए, इसीलिए उनको जो भी काम देंगे उस चीज को टाइनी मैन विल डू इट, है ना। नेक्स्ट वन इज दैट व्हाट वाज पैट्रिक विश, पैट्रिक का विश क्या था, व्हाट वाज द विश, वो क्या चाहता था। So यहाँ पे you have the Patrick's wish was that the tiny man, अपना सारा काम करवाना चाहता था। हाँ yes, एलिफ से सारा काम करवाना चाहता था, that was his wish, है ना। So here Patrick wish was that the tiny man should do all the homeworks, all his homeworks, है ना। The tiny man should do all his homework, यही विश था उनका, इच्छा यही था ना। Yes. Do you have any doubt in this question? No. Now next one, question 4. Can you read question 4? Yes, ma'am. Ma'am, हाँ पढ़ो। in what subjects did the little man need help to do Patrick's homework? Okay. In what subject? In what subjects he wanted help? क्या सब्जेक्ट उनको डिफिकल्ट लग रहा था जो कि वो उनको हेल्प की जरूरत था। The little man needed Patrick's help. Patrick's help in maths, English, and history. Yes. So in maths, English, and history, he did not know how to do addition, subtraction, multiplication, and division and fractions, है ना। हमने पढ़ा था ना बच्चे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये याद नहीं था कि इंग्लिश में लिटरेचर में क्या होता है एंड ग्रामेटिकल में कैसे उनको सही करना है, डिड नॉट नो। एंड हिस्ट्री कितने इयर्स के बाद क्या होता है, क्या हुआ था, एवरीथिंग ही कैन नॉट रिमेम्बर बिकॉज ही हैड नो माइंड लाइक दैट, क्योंकि वो सब के बारे में कभी सुना भी नहीं होगा। दैट्स व्हाई ही डिड नॉट नो टू राइट एंड रीड, सो ही टोल्ड Patrick to read the things and he just wrote it down. Clear? Yes, ma'am. Next Yes, question. yes, Yes, Divya. Can you read the next question, beta? How did Patrick help him? Yes, correct. How did Patrick help him? Patrick उनको कैसे मदद किया, कैसे हेल्प किया, कैसे वो हाथ बटाया उनके। How? मैम वो लाइब्रेरी में जाते थे दोनों। Yes, both of them, they used to go to the library and read the books. They could search the meaning of the word in the dictionary and all, है ना। Yes, ma'am. डिफिकल्ट वर्ड्स का मीनिंग और डिक्शनरी में आपने ढूंढते थे। क्वेश्चन भेजे तो मुझे वो फर्स्ट वाला समझ में नहीं आ रहा था क्वेश्चन। हाँ, फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये था, डिड पैट्रिक लाइक टू डू होमवर्क, क्या पैट्रिक को होमवर्क करना पसंद था। फर्स्ट लाइन में चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि ही नेवर लाइक्ड टू डू एनी होमवर्क, नो, है ना। तो आंसर ओनली नो यू हैव टू राइट। यस मैम, Yes, ma'am. आया सुहाना, समझ में आ गया बेटा। यस मैम। मैम हम ये भी लिख सकते हैं he doesn't like to do homework. यस, और शॉर्ट क्वेश्चन होगा तो नो ही डिड नॉट लाइक। एमसीक्यू क्वेश्चन है तो शॉर्ट होना चाहिए। हाँ, शॉर्ट होगा। सो लाइक दिस यू विल गेट द क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम एंड ऑल। हाँ, सो एमसीक्यू या शॉर्ट आंसर्स, so you have to see the in the heading they will it will be written that it is a short question or it is a long question or a MCQ, all that instruction will be given to you. Okay, last question answer is, can you read someone please? Princey, padho beta question